ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 तक हुआ था अपना, और मैं वापस बहुत दिनों बात कर रहा हूँ, तो इस बार में फ्लोर होगा। एनीवे, जस्ट कीप गोइंग। तो 21 करते, ट्रांसफर्स। ओके, सो 21। ओके, ट्रांसफर्स एक्सिस ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी स्क्वायर रूट 2, और वो ठीक है, समझ गए। ओके, ट्रांसफर एक्सिस तुम्हें दी है, सेंटर इज 1,1, सो ग्राफ मत करो, तुझे क्या पता हो कैसा हो। इफ द हाइपरबोला passes through this point then its transverse axis is, ओके, तो अपने को ट्रांसफर एक्सिस दी है, अपने को सेंटर दिया है, तो फिर अपन दूसरी एक्सिस ढूंढ सकते हैं, राइट? तो दूसरी एक्सिस लाइक किस फॉर्मेट में होगी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू समथिंग, बिकॉज परपेंडिकुलर चाहिए अपने को, सो एक्स माइनस वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे 1,1 है तो ऑब्वियसली वो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा। सो एक लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 है, एक एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस, और दूसरी एक्सिस है वाई इक्वल टू एक्स। ऑलराइट, और अपने को चाहिए कि हाइपरबोला जो है इससे पास, सो वो ये ना, कैपिटल एक्स टाइम्स कैपिटल वाई इक्वल टू समथिंग, राइट? ओह नहीं, अच्छा, रेक्टेंगल हाइपरबोला नहीं है। है ऑब्वियसली, बट उस टाइप से नहीं दिया, तो मैं जो बोल रहा था वो ऐसा होता था, वो नहीं है ये। असिम्प्टोल्स नहीं दिया। थिंग इज कि तुम्हें ऐसा हाइपरबोला चाहिए रहेगा, so इसके लिए आएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर, विच इज ट्रांसफर एक्सिस का जो रहेगा, विच इज एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ओके, माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर, सो एक्स माइनस वाई अपॉन स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, राइट? इनफैक्ट ये चीज अपॉन ए स्क्वायर चाहिए ना, तो ये चीज अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर आएगा क्योंकि इसेंट्रिसिटी स्क्वायर रूट 2 है, रेक्टेंगल हाइपरबोला, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, राइट, इक्वल टू 1, ऑफ कोर्स वो ही अपना होगा। और तुम बोल रहे हो कि 5,2 जो है इस हाइपरबोला पे सिट करता है, देन फाइन, अपन वो ढूंढ सकते हैं आराम से, तो ये जाएगा ऊपर 2 ए स्क्वायर जाएगा, नाउ इट्स जस्ट, so x plus y, 5 plus 2 7, 7 minus 2 यानी कि 5, 5 squared minus, तो 0 हो गया ना, नहीं 3, सॉरी, 3 squared, दैट्स जस्ट, या 3 हो जाएगा 4 square यानी कि 16 इज इक्वल टू 2a square, आई थिंक सो। a इज इक्वल टू 2 square रूट 2, कूल। तो अपने को ठीक है, a मिल गया, वो रहेगी सेमी सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, वॉट एवर। अपने को क्या चाहिए, ट्रांसवर्स एक्सिस, ऑब्वियसली इसका डबल, सो 4 square रूट 2, सो k इज 4, 21st का 4, okay, 22nd, let's do. If y equal to this thing, then e power, okay, what is this, y dash squared plus, and x equal to 1 is equal to, उफ, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, y डैश ढूंढो, y डबल डैश ढूंढो, वो सब, हाँ ठीक है, e पावर दिस, सो क्या ये एक्सप्रेशन y डैश स्क्वायर प्लस y डैश माइनस y डबल डैश, राइट? थिंकिंग कि इसको कोई और अलग तरह से नहीं कर सकते क्या? यहाँ पे वाई डैश स्क्वायर आया, यहाँ पे सिर्फ वाई डैश आया, राइट? सो प्रोबेबली नहीं कर सकते, तो अपने को ढूंढना ही पड़ेगा वैसे भी, क्योंकि वैसे भी कैलकुलेट करने के लिए ढूंढना ही पड़ेगा। सो या, और ई की पावर ये सब, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई इट आउट। सो वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स, राइट? सो या, और दैट मीन्स दैट वाई डैश इज इक्वल टू ये सेम चीज, बट द डेरिवेटिव ऑफ जो ऊपर था ना, ई पावर नेचुरल लॉग, वो सब उसका, सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, सो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और फिर आई थिंक कि ये किसी तो भी मतलब अलग चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं, बट है वॉट एवर, जस्ट फाइंड वाई डैश एंड वाई डबल डैश। तो ये एक्स का डेरिवेटिव था, प्लस अपन इसका भी डेरिवेटिव लिखे, सो एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, एंड देन इसका डेरिवेटिव नेगेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव 1 अपॉन एक्स, क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई करोगे लाइक दिस, और फिर ये एक्स प्लस 1 हो जाएगा, सो नेगेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस 1, देयर वी गो। ओके कूल, सो अपने को वाई डैश मिल, ओके, अब मुझे समझ रहा है क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सो वाई डैश इज इक्वल टू वाई टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, वॉट एवर। सो इस टाइप से अपन वाई डबल डैश इन टर्म्स ऑफ वाई ढूंढ सकते हैं ना डायरेक्टली, आई मीन वाई डैश, यस। सो वाई डबल डैश दैट विल बी इक्वल टू, एक तो वाई डैश हो जाएगा, वाई डैश नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और वॉट एवर, या श्योर।
और दूसरा आएगा इस चीज का पूरा डेरिवेटिव, सो जस्ट y टाइम्स इसका डेरिवेटिव। सो ये तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं ना, राइट? नहीं, अपन x टाइम्स ये चीज का डेरिवेटिव कर चुके हैं। सो इन दिस केस इट विल जस्ट बी नेगेटिव x अपॉन x प्लस 1, सॉरी नहीं 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 नहीं, नेगेटिव 1 अपॉन x, राइट? x टाइम्स वो था तो ये ऐसा होगा, और फिर इसका डेरिवेटिव जस्ट 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर। कूल। तो अब क्या कैलकुलेट कर लो। सो पहले तो y कैलकुलेट करते हैं, y एट x इक्वल टू 1, दैट इज राइट, सो जस्ट 2 पावर 1 तो 2 हो जाएगा। देन y डैश इज so 2 times of all of this, so natural log of 2 minus 1 upon 2, I think, yeah, okay, and then y double dash is equal to, so ये same चीज, right, right, but y dash ये सब था तो ये जगह 2 into natural log 2 minus 1 upon 2 का स्क्वायर। oh अच्छा, अब मुझे समझा ये क्या है। दिस इज जस्ट इक्वल टू, लाइक ये जो पूरा है दैट्स जस्ट इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ इसको, y dash upon y, right? Exactly. Hey, whatever, just keep on going. और प्लस y, तो y तो 2 है, राइट? यानी 2 नेचुरल लॉग वो सब था और फिर सेम नेचुरल लॉग वगैरह सब वापस आ गया, तो ऐसा हो जाएगा। और अब ये क्या है, सो नेगेटिव 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4, आई थिंक, सो इट्स नेगेटिव 1 अपॉन 4, तो इस जगह नेगेटिव 1 अपॉन 2। अपने क्या चाहिए, अपने को चाहिए है वेयर इज इट, राइट, ये चीज ना। सो y डैश स्क्वायर, ये पूरी चीज का स्क्वायर, सो 4 टाइम्स ऑफ ये सब, ओके फाइन, प्लस y डैश वापस, ओके, माइनस y टाइम्स y डैश, ओह ओके ओके, आई एम गेटिंग इट। सो y डैश स्क्वायर माइनस y टाइम्स y डैश, दैट्स जस्ट 4 natural log 2 minus 1 upon 2 square, okay, minus 4 सेम चीज, ओके, बट यहाँ पे नेगेटिव 1 भी आएगा तो उसका नेगेटिव 1, सो 1 ये पूरी चीज, एंड प्लस y डैश, राइट, एंड y डैश इज दिस थिंग्स लाइक 2 natural log 2 minus 1, तो ये तो गया, दिस इज natural log 4, तो e की पावर वो चीज है जस्ट 4, सो 22 का भी 4। नेक्स्ट 23, क्या है, सर्कल पासिंग थ्रू द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अच्छा, तुम्हें 3 पॉइंट्स दिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t, ऑल वैल्यूज ऑफ t, ओह दैट्स इंटरेस्टिंग। passes through the point a comma b, then a square plus b square is, अच्छा तो एक सर्कल है वो सारी t की वैल्यूज के लिए इससे पास होता है, एंड इट आल्सो passes through the point a comma b। hey, first of all notice कि ये तुम्हें ऐसा, ओके समझ गया। सो 1 कॉमा टी से अगर तुम टी कॉमा टी पे जा रहे हो देन यू आर जस्ट मूविंग अलोंग दी एक्स एक्सिस, और यहाँ से अगर तुम टी कॉमा 1 से टी कॉमा टी पे जा रहे हो तो यू आर मूविंग अलोंग दी वाई एक्सिस, राइट? सो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर हो गए, एंड दैट मींस कि ये 1 कॉमा टी और टी कॉमा 1 दीज आर एक्चुअली लाइक डायमेट्रिकल पॉइंट्स, ठीक है? तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एंड हे दिस, अच्छा ठीक है, करते हैं फिर। सो x minus 1 into x minus t, this y minus 1 into y minus t, right? And that is equal to 0. That is the circle. और ये तो ऑब्वियस है कि ये 1,1 से हमेशा पास होने वाला है, so there we go. Yeah, so 1,1 एक दूसरा डायमेट्रिकल एंड रहेगा, t, t तो है ही, और t, t का जो दूसरा डायमेट्रिकल एंड that's 1,1, तो ठीक है ना? a plus b is just true. 24th is, if A is this matrix, where U is not equal to, oh हाँ, and by the way वो एरोटोफ पे अपडेट, मैं वो बुक सॉल्व करने वाला हूँ, राइट? मेरा प्लान है वो करने का, बट ये मैं इतना सेक्शन इंटीजर टाइप करने के बाद में करूँगा। इसमें क्या एट मैक्स 2 दिन लग सकते हैं, देखेंगे, ठीक है? मैट्रिक्स का तुम्हें ये चीज वेयर u is not equal to negative 11/3 and then determinant of adjoint of a is equal to, so ये 3/3 मैट्रिक्स है, राइट? सो सारे adjoints भी सारे 3/3 रहेंगे, तो 3/3 adjoints मतलब क्या बोल सकते हैं कि a adjoint of a equal to determinant of a times identity matrix। तो अगर मैं या इनका डिटर्मिनेंट ले लूँ, दैट जस्ट मींस determinant of a times determinant of adjoint of a,
is equal to determinant of A का cube because 3 into 3 matrix A. That means adjoint of A का determinant जो है, so call this thing determinant of adjoint of A, जहाँ पे A कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, that is just equal to determinant of A square. Yeah, of course. तो determinant of adjoint of जो अंदर की चीज है, right, that is equal to determinant of adjoint of A का स्क्वायर, राइट, बिकॉज ये सेम फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे जो अंदर की चीज है एडजॉइंट ऑफ ए, उसको एज तुम ए यूज कर रहे हो यहाँ पे इस फॉर्मूले में, फाइन। और फिर क्या वापस सेम चीज, सो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 एंड दैट इज इक्वल टू 23 की पावर 4, राइट। सो दैट जस्ट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए वाला इट कैन नॉट बी कॉम्प्लेक्स, तो नहीं हो सकता क्योंकि रियल नंबर चाहिए अपने को, सो इट कैन ओनली बी प्लस माइनस 23। देयर वी गो, कूल। देन द वैल्यू ऑफ यू इज फाइन, तो इसका डिटर्मिनेंट तुम्हें 23 मिला है, सीरियसली। है सो अच्छा, ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इस टाइप का हो रहा है, फाइन फाइन फाइन, सिर्फ यू एक ही जगह पे आ रहा है, राइट। सो पहले तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो लेट्स सी। इन दोनों लाइंस को यूज करने के अलावा अपन कुछ भी कर सकते हैं, सो नेगेटिव 1 1 2 को इस पर मैं ऐड कर सकता हूँ, तो ये जगह 1 और समथिंग व्हाटएवर। उफ, तो बहुत लंबा हो गया यार। लेट्स से अगर अपन ये जो रो है ये खाली करना शुरू कर डाले, नहीं आइडिया बुरा है, काफी बुरा है, नॉट वर्थ डूइंग, बट कम ऑन यार, क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है इसमें, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। व्हाट आई एम थिंकिंग इज ओके, एक काम करते हैं, ये जो चीज है ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं, ऐड नहीं फिर सबट्रैक्ट कर डालेंगे, मे दैट विल हेल्प। सो ये हो जाएगा नेगेटिव 1 2 और 2 1, नेगेटिव 1 और इसमें 2, या वो चीज की मैंने, सो इट्स जस्ट गोइंग टू बी नेगेटिव 3 0 और 2, राइट। फिर मैं नेक्स्ट सोच रहा हूँ कि इसको इसमें नहीं, एक काम करते हैं इसको इसमें ऐड करते हैं, सो जस्ट गोइंग टू बी यू नेगेटिव 1 2 2 1 0 नेगेटिव 3, सब कुछ सही है, पर इसको मैंने ऐड किया, सो नाउ इट्स गोइंग टू बी 1 0 and 2. Oh wait, shouldn't this be, yeah, क्योंकि नेगेटिव, ओके ये 3 हो जाएगा बिकॉज 2 टाइम्स किया ना अपन ने, फिर तो मैंने पूरा गलत ही कर डाला है वाली वो को, होता है शायद से ये बेस्ट आइडिया नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं ना अपन, डायरेक्टली कैलकुलेट करो इसको। अगली बार से मैं डायरेक्टली कैलकुलेट ही क्या करूँगा क्योंकि जब भी मुझे नंबर्स मिल गए तो ये कैलकुलेटेबल है और सादे इंटीजर्स है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सो यू इंटू दैट से ये क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 2, सो 3, ओके, देन माइनस 2 इंटू, सो ये जाएगा -1 -4, सो -5, ओके, एंड देन -1 इंटू 1 -2, दैट्स नेगेटिव 1, इट वाज इजी। सो ये जस्ट हो जाएगा 3u प्लस 10, just wait a second, ओके कुछ नहीं, हाँ कंटिन्यू, सो प्लस 1 दैट्स इक्वल टू, अपने को क्या चाहिए डिटरमिनेंट, प्लस माइनस 23, सो 3u इक्वल टू नेगेटिव 11 प्लस माइनस 23। लेट्स से अगर नेगेटिव वर्जन लेते तो ओह, सो नेगेटिव 11/3 नहीं चलेगा, सो u कैनॉट बी इक्वल टू नेगेटिव 11/3, oh yeah of course because in that case c डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, फिर अपन ने जो पूरा किया उससे अपन ने डिटरमिनेंट से डिवाइड किया था, so it doesn't make any sense। so ठीक है ना, 2 ऑप्शंस मिलेंगे तुम्हें, then the value of u is, फिर अपने को 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, that's not a good thing, right? wait what, no this is not good, अपने को 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे इस टाइप से, whatever, ये मल्टीपल चॉइस नहीं होना चाहिए ना, अपन सिर्फ जो इंटीजर टाइप है वही वाला ऑप्शन देखेंगे। सो लेट्स से 23 माइनस 11 किया अपन ने, सो जस्ट 12 हो जाएगा, दैट मींस u इज इक्वल टू 4, दैट्स इट, यही एक ऑप्शन होगा जो कि प्रोबेबली करेक्ट है बिकॉज दूसरा वाला काम नहीं करेगा शायद से। सो दूसरा वाला क्या है, इट्स जस्ट नेगेटिव 34, ऑफ कोर्स 3 का मल्टीपल नहीं है, सो देयर वी गो, 4 इज द आंसर। टेक्निकली नहीं है, 2 आंसर्स हो गए, बट चलो ठीक है ना यार, इंटीजर टाइप करना है आपको खुद से। नेक्स्ट 25th is if 7u equal to 2 pi, then find the value.
absolute value of the expression y equal to, okay, ये सारी चीजें secant alpha secant, hey, so complex analysis अपन यहाँ पे कर सकते हैं, right? I think, yeah, might actually work. So secant alpha we can write it in complex format, I think. So नहीं नहीं यार, I don't think वो काम नहीं करेगा ना, because that won't help. So 7 alpha is equal to 2 pi. Secant 4 alpha. मतलब कि alpha equal to 2 pi by 7 basically. So secant of 2 pi by 7 plus secant of whatever. So you know कि this is same thing, 4 alpha. Secant of 4 alpha, that is same thing as secant of 3 alpha, because 3 alpha just 2 pi minus 4 alpha, right? तो वो same चीज हो जाएगी. I get that. तो हाँ, so you can find like, okay, 3 alpha आ जाएगा यहाँ से, 2 अल्फा का क्या हो जाता है, 5 अल्फा भी आ जाएगा, यहाँ से 6 अल्फा आ जाएगा. सो टिल 6 तुम इनफैक्ट कर चुके हो. सो दिस इज एक्चुअली द सेम थिंग एज हाफ ऑफ सेकंड अल्फा से स्टार्ट करेंगे, विल गो ऑल द वे टिल सेकंड ऑफ 6 अल्फा, राइट? या आई थिंक दैट लुक्स करेक्ट. मतलब ठीक है, बट अब इसका क्या करूँ? सेकंड के एडिशन का कोई मुझे पता नहीं वो कैसे करते हैं. या अनलेस मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करूँ तो ठीक है. यू नो व्हाट करते, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करते. सो लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स से कि सेकंड ऑफ आर अल्फा जो रहेगा, विल से दैट्स इज इक्वल टू ए आर. सो वी कैन से कि 1 अपॉन ए आर इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ आर अल्फा व्हाटएवर. या so cosine of r alpha that's is equal to or let's say e power I alpha that is equal to, I don't know, capital A. तो ये हो जाएगा a power r plus a power negative r, right, upon 2. Cool, good till now. Yeah, अब अपने को a power r इससे ढूंढना पड़ेगा, which is right, it's not something nice to do. अच्छा, मुझे अब समझा क्या करना. सो ए पावर आर अपन सारे ऐड करने वाले हैं, राइट? कोर्स, आई मीन लुक एट दैट. अगर अपने को इसका समेशन करना है, then you can just summing this up. Oh yeah, why not just let's 1 upon AR. Sorry, अपने को AR देखना है. So अपने को एक्चुअली क्या चाहिए? We want AR का sum. That would just be 2 upon A power R plus A power negative R or something. तो partial fractions, no, not really. काम नहीं करेगा, राइट? ऐसा कोई इक्वेशन जो कि सिर्फ ए आर ही फॉलो करता हो, आई मीन ये सारे ए आर फॉलो करते हो, और ये कितना है, ये 6 ए आर सिर्फ वो फॉलो करते हो, ऐसा कोई इक्वेशन है? यार टैन वगैरह में था तो ये बहुत इजी था, अभी अचानक से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना. Or you can just say, okay, this is just equal to the real part of AR. So yeah, I mean, this is just bad. This is really bad. कोई ऐसी चीज जो कि सिर्फ ये फॉलो करता है, ऐसा कोई इक्वेशन या फिर कुछ भी. सो ऑल वी नो इज कि AR to the power of 7 that will be just right, वो पूरा सिर्फ 1 हो जाएगा, and that is a nice thing, yes, but इसका क्या होगा? So you know this thing. यार ये तो मुश्किल होता जा रहा है लेकिन. Secant alpha, अपन cosine of 2 tan alpha, right? Right, मतलब tan में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं. That's just a bad idea because काम नहीं करेगा. Need to figure out something else. Can't think about it, yeah. 2 upon A power R plus A power negative R.
कौन सा इक्वेशन को फॉलो करता है यार? We don't know. That's the problem. We don't know this. We know that's the real number for sure. Right, like partition. I get that. I get all of that. But इसके आगे क्या? Square करो, इसको cube करो, something to the power of 7. This to the power of 7 maybe? Well, that could probably work. Yeah. Okay, that's not a good idea. वो तुमको geometry एक टाइप की सीरीज देगा and that's it. वहीं पे अपन रुक जाएंगे. Oh wait, geometric series you say, huh? Why don't we do it like this? हो जाएगा a power 2r plus 1 नहीं यार. We don't want plus 1. I mean, it's actually very much doable. No problem with that. Just, I want it like that. Okay, at this point we don't know ये कैसे करते हैं. Yeah, I think normal ट्रिको ही सही था, but ऐसे अगर बहुत सारे आ गए तो मैं क्या करूँगा उसका? It's a kind of problem, right? ऐसे अगर बहुत सारे आ गए, then we are just stuck. You know what? I think मैंने ये चीज कभी देखी, cosine of alpha. Okay, ठीक है. That's not because उसमें sin of right, so sin of a plus b plus c वो जो आइडेंटिटी है उसमें अपने को मिलता है cosine p cosine c साथ में and so on. But right, that's not doable. वो काम नहीं करेगा. So completely tips of secant alpha अगर अपने को कोई और एक्सप्रेशन चाहिए, how do we do this? secant alpha से क्या अपन let's say cosine 2 alpha वगैरह पे जा सकते हैं. I mean सेम है सेम ही कि तुम cosine alpha से cosine 2 alpha पे सकते हो. हाँ, लेकिन sin 2 alpha पे जा सकते हो डायरेक्टली इन पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस. नहीं, that's the problem, right? Some helping. What about say नहीं, it is not making sense. I think this is point. This point अपने को रुकना चाहिए. ये इसको और आगे मैं कंटिन्यू करूँगा तो मेरा ही टाइम बर्बाद होगा. तो ठीक है, ये भी एक बार मैं देख लूँगा कैसे करते हैं. मतलब इन जनरल अभी के तो सिर्फ डायरेक्टली सॉल्व करना है तो just go with it. क्या है ये? कोसाइन ऑफ मतलब 1 अपॉन कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस 1 अपॉन लेट्स से कोसाइन ऑफ 4 अल्फा से स्टार्ट करते हैं and then this cross, so you got 2 cosine of 4. थोड़ा सा गंदी वैल्यू 3 अल्फा यूज करो ना यहाँ पे फॉर या ऑफ कोर्स. so ये हो जाएगा cosine 3 अल्फा प्लस cosine अल्फा यानी कि 4 अल्फा का हाफ यानी कि 2 अल्फा and then cosine of alpha and that upon cosine alpha cosine 3 alpha. Wait. Are you saying कि oh that's weird. लाइक यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है और ये क्यों हुआ? बिकॉज इनका जो डिफरेंस था दैट वाज अल्फा, सो दैट्स व्हाई ये चीज आई. ओके, ये इंसिडेंटल हुआ कि ये चीज बट इनका जो मीन है नहीं, वो भी नहीं आया ना, वो तो यहाँ पे है ही नहीं. सो ठीक है, ये सिर्फ इसी चीज के लिए काम करेगा. आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी इन जनरल. तो ठीक है, it's just equal to this thing 2 cosine of 2 alpha upon cosine of 3 alpha and that plus, so this thing plus 1 upon cosine of what? 2 alpha, right? That is just 2 cosine square of 2 alpha plus cosine of 3 alpha upon cosine 2 alpha cosine 3 alpha whatever, which is so यहाँ पे मैं negative 1 plus 1 कर रहा हूँ, so just 1 plus cosine of 4 alpha plus cosine of 3 alpha upon cosine of 2 alpha cosine of 3 alpha so on, right? So ये चीज it's just equal to 1 plus 2 cosine of 3 alpha, right? इसका मैं क्या करूँगा यार? This is burdensome. Right, अपने को ये चीज मिली थी, no problem with that. But इसके आगे प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बिकॉज ये लाइक दिस. इस चीज को मैं कुछ कर सकता.
4 अल्फा मींस द सेम थिंग इन फैक्ट. अब क्या? नाउ व्हाट? एट दिस पॉइंट हमारे पास कुछ भी नहीं जो अपन कर सकते. 7 अल्फा समहाउ. ओके, इसको मैं एज ओके व्हाट्स 2 अल्फा का हो जाएगा 5 अल्फा या और इसका मैं 4 कर सकता हूँ. सो ठीक है, उसका क्या, उसका कोई बेनिफिट है क्या अपने पास में? नॉट रियली. दिस इज इट. यहीं पे अपन रुक जाएंगे, इसके आगे नहीं होगा सब. दिस इज नॉट, दिस इज नॉट गुड. नहीं, जस्ट डोंट नो कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ. ठीक है, जस्ट मूव ऑन. आई रियली थिंक कि इसे कोई अच्छी मेथड होगी. सो 25th का अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, 26th. The value of this integral, okay, whatever. So 0 से infinity x power 10 e power negative x square. Oh, it's like the gamma function, of course. So in fact अपने को एक जनरल प्रूफ करना पड़ेगा, यार ये गामा फंक्शन जैसा हो गया ना. So integration 0 to infinity of, let's just talk about x power n instead. 10 और 6 से अच्छा, so e power negative x square dx. All this thing is f of x. If I call this thing as f of n because yeah, f of n. So अगर मैं इसको डिफरेंशिएट पार्ट्स वगैरह करूँ then that just means this is, let's see, पहले अपन x पावर n को इंटीग्रेट करेंगे. ओके मे बी व्हाटएवर. आई थिंक इसको डिफरेंशिएट करना बेटर, राइट? सो किस चीज को इंटीग्रेट करेंगे अपन? लेट्स गो फॉर x e पावर नेगेटिव x, फिर उसको अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं. यस, एंड दैट विल जस्ट बी x पावर n माइनस 1. एंड फिर यहाँ पे आ जाएगा अपने को 2x करने वाला है डिवाइड बाय 2 एंड ऑफ कोर्स नेगेटिव भी लगेगा, सो नेगेटिव एंड देन e पावर नेगेटिव x स्क्वायर. इट गोस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. अच्छी बात ये है कि बिकॉज एट इंफिनिटी दिस थिंग इज 0 और ये इससे बहुत बड़ा, मतलब e पावर x स्क्वायर काफी बड़ा होगा एक पॉलिनोमियल फंक्शन से. सो वो 0 हो जाएगा और 0 पे भी ये 0 हो रहा है एंड दैट मींस ये पूरी चीज तो गई और सिर्फ जो दूसरी बची हुई चीज थी जस्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर नेगेटिव x स्क्वायर एंड देन x पावर n minus 1 का डेरिवेटिव, राइट? सो इसका भी प्लस n minus 1 into x power n minus 2 and then dx. Cool. There we go. So हाँ अपन इसमें स्टेप लिख सकते हैं, right? Looks good. Yeah, I mean, of course, why not? और फिर क्या हो जाएगा कि oh right, this is actually just same as saying that f of n is just n minus 1 into f of, wait what? But this makes no sense क्योंकि इस टाइप से तो ये गामा फंक्शन से बिहेव नहीं कर रहा है यार, कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है. दिस इज नॉट नाइस. क्या मैंने कुछ भी जगह पे गलत किया? नहीं यार, मैंने सही किया. एक्स एन माइनस 1 का माइनस 2 हो जाएगा और वो जो एक्स है वो जस्ट कंज्यूम हो जाएगा ये चीज़ करने में, विच इज परफेक्ट. तो यस, इट रियली इज जस्ट एक्स. ओके, n minus 1 f of n minus 2, हाँ, रियली इज जस्ट दैट. तो ठीक है यार, नॉट एग्जैक्टली गामा फंक्शन बट ऑलमोस्ट लाइक दैट. ठीक है. सो f ऑफ, इन दिस केस आपको 10 चाहिए, सो f ऑफ 10 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू f ऑफ 8, राइट? और फिर f ऑफ 8 को मैं लिख सकता हूँ 7 into f of 6. There we go. F of 6 नीचे है अपने पास में. So it's basically just 4 into 9 into 7 upon 7. That's it. It's the whole thing. So it's just equal to 36. So ये 36 हो जाएगा. Okay, cool. Next. 27. Let p of x be equal to x power 5 plus x squared plus 1 have roots x1, x2, x3, x4 and x5. Okay. ठीक है, g of x is equal to this has what? Okay, then the value of this expression, really, so x1, x2, x3, x4, x5 तो बहुत बुरी बात नहीं है. It's just g of 1, right? Because oh no, it's going to be negative 1, so it's just g of negative 1. Fine. और right, ये चीज़, ये जो प्रोडक्ट रहेगा g of x1 is just x squared minus 2 or so on. Oh, isn't it like this thing? So अगर मैं एक पॉलिनोमियल दूसरा पॉलिनोमियल कंसीडर करूं, that's just equal to let's say f of x is equal to
f of x की जो roots है those are x1 square, x2 square and so on. So and it's also equal to negative of x minus x1 squared, x minus x2 squared and so on, right? So it's clear कि ये जो चीज रहेगी और ये जो चीज रहेगी, अगर मैं f of 2 कंसिडर करता हूँ, f of 2 is just this thing, right? g of x1 x2, yeah, 5 है एग्जैक्टली, इसलिए मैंने नेगेटिव डाला है. अब क्योंकि इसके रूट्स ये है और अगर मैं सिर्फ इतना कंसिडर करूँ, ये पूरा मोनिक पॉलिनोमियल रहेगा. वेरी नाइस. x पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाता है x माइनस x1 x प्लस x2 एंड सो ऑन, राइट? इसके रूट्स वो रहेंगे. ये कूल. बट अगर मैं x प्लस x1 x प्लस x2 वो सारा मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करूँ तो उसके रूट्स निगेटिव में आएंगे. एंड अगर पूरी प्रोसेस सेम होगी एक्सेप्ट कि अब तुम्हारा x सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो तुम्हारा नेगेटिव x सेटिस्फाई कर रहा है. दैट मीन्स कि नेगेटिव x पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 दैट विल बी what will be 0 अगर x x1 है या सॉरी x नेगेटिव x1 है या नेगेटिव x2 एंड सो ऑन. तो ये चीज टाइम्स x पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 1. There we go. That's what this whole expression is. So no sweat. Then f of 2, right? So ये just negative हो जाएगा. That means f of 2 is what this whole is. And क्या हो जाएगा वो negative of, तो अपने को क्या चाहिए 2, right? Exactly. Oh no. You know what? No, let's just go for x square over here. तो अब ये काम करेगा because yeah, इसमें सिर्फ 5 डिग्री पॉलिनोमियल था and that's not good. अब ये प्रॉपर काम कर सकता है. दैट मीन्स इन दिस केस अपने को f of 2 नहीं चाहिए रहेगा, चाहिए रहेगा f of square root 2 बिकॉज square root 2 का square 2 होता है. इनफैक्ट f of negative 2 भी सेम देगा. yes, I mean तो ऑब्वियस बिकॉज g1 फंक्शन. yes, और ये चीज क्या हो जाएगी negative of, well, just square root 2 की power 5 or something. Oh, so we can just do it like this, x square plus 1 की power 2 minus x power 10, which is not that hard to do. Just 3 power 2 because exactly minus, so 2 power 10 is 2 power 5 I think, because yeah, and that's just equal to 32 minus 9. तो क्या हो जाएगा ये 23. So 23 is the answer for this thing. So 23 minus 30 into, so g of negative 1, that is just negative 1. So this times negative 1, that's just equal to 53. So 53 is the answer होगा hopefully. Okay, 28. Is length of the legs of a right angle triangle are 1 and square root 2. The smallest angle is alpha. The value of cosine of 8 alpha can be expressed in the lowest form as p upon q. Achha. Length of the legs of a right angle triangle are 1 and square root 2. Okay, the smallest angle, the PA angle, is just equal to alpha. So basically, you're just saying, okay, come on, yaar, tan alpha is equal to 1 upon square root. That's all you're saying, huh? If the value of cosine of 8 alpha can be expressed in the form of, in the lowest form as p upon q, where p, q belong to natural numbers and p plus q is. Oh, okay, this is just really bad. ठीक है, so no big deal. अपने को tan alpha मिल गया. You can just figure out what cosine of 2 alpha is, just 1 minus t squared upon 1 plus t squared, and that's just, yes, 1 minus 1 upon 2 is just 1 upon 2, not upon 3, 1 upon 3, right? और फिर अपने को cosine 2 alpha मिल गया, cosine of 4 alpha के लिए जाते हैं, just equal to 2c squared minus 1, so 2c squared minus 1 यानी कि 2 upon 9 minus 1 हो जाएगा, which is just negative. Weird, no? It's negative or whatever. So yeah, negative 7 upon 9 और फिर वापस 2 c squared minus 1. तो ये था cosine 2 alpha. This is cosine of 4 alpha. I want cosine of 8 alpha. That's going to be 2 times of इसका square, just 2 times of 49 upon 81, and then minus 1. And that will be, so 8 and what's this thing? 18, so 98. Yeah, that's 81 upon 81, which is 17 upon 81. There we go, that's our value, right? तो ये जो पूरी चीज है cosine of 8 alpha, that's expressed as p upon a, p है, ये q है, p plus q, that's just 98 I think. Next, 29. 29 is let a be क्या है ये, अच्छा 4 पॉइंट्स से be fixed points on straight line such that OA is equal to OB is equal to O. Okay,
what OB is equal to BC on स्ट्रेट लाइन पर फिक्स्ड पॉइंट्स है। ओह इफ सेमीसर्कल इज ड्रॉन ऑन AB, वैसे सब कुछ ज्योमेट्री है यार, बहुत ही अच्छा। फिर अपन कोऑर्डिनेट्स अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं व्हाटएवर। पहले ड्रॉ करते हैं इसको। सो ये सपोज O है एंड व्हाट वी आर सेइंग इज कि OA इज, तो ओके ये फिक्स्ड पॉइंट इन द स्ट्रेट लाइन OA इज इक्वल टू OB। सो आई एम गेसिंग कि B यहाँ पे होगा अगर वो डिस्टिंक्ट रहे तो, एंड BC इज इक्वल टू 1। तो ओह अच्छा ये भी सेम चीज है। So ये 1 है, ये 1 है, देन दिस इज गोइंग टू बी द C वैल्यू, मतलब ये C यहाँ पे होगा। ओके अ सेमीसर्कल इज ड्रॉन ऑन AB as diameter, AB as diameter, okay, and a variable point P is chosen on the circumference such that angle POC, okay, draw कर लेते हैं। So maybe like this, ऐसा सेमीसर्कल क्रिएट। वेट अच्छा सिर्फ सेमी सर्कल क्रिएट क्या फर्क क्या पड़ता है? तुम लोकस की बात करते हो, सर्कल ही कंसीडर करो। ओके P is chosen on the circumference such that angle POC, तो ये एंगल P है POC। अच्छा ये जो चीज है दैट इज इक्वल टू थीटा। क्या मैंने कभी देखा ऐसा लग रहा है? आई थिंक the value of theta for which the area enclosed as region angle, okay whatever, is maximum is k, then sorry अच्छा ठीक है, area enclosed as region A, B, C, B and A. Okay, that's just a triangle, right? I think. Okay, क्या करना है अगर ये रीजन का एरिया मैक्सिमम, तो पहले तो एरिया निकालो इन टर्म्स ऑफ थीटा, राइट? ठीक है ये एंगल थीटा है, तुमने बोला है मुझे। ये ऑफ कोर्स 1 रहेगा। सो P इज लाइक, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? कोसाइन ऑफ थीटा कॉमा साइन थीटा, राइट? या तो फिर ये इतना मुश्किल नहीं है बिकॉज ये पूरी जो चीज है इसका बेस तो कांस्टेंट है यार। सो द क्या क्या बेस है ये? अरे या सॉरी ये थीटा होगा तब ऐसा होगा, दिस इज नॉट, सॉरी 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 सॉरी। हाँ ठीक है, इसका बेस क्या है? इसका बेस 2 है। यू नो दिस थिंग इज 1, मे बी यू कैन फिगर आउट की हाइट क्या है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन जस्ट फिगर आउट। अच्छा ठीक है, तुम्हें हाइट फिगर आउट करनी है, तुम कैसे करोगे? एंगल चीजिंग तो काम नहीं करेगा। वी नीड टू फिगर आउट ये एंगल क्या है। साइन लॉ आई थिंक, या सो ये चीज यानी कि 1 अपॉन, लेट्स कॉल दिस थिंग अल्फा, सो 1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन थीटा। सो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2, ओके दैट वी गॉट एट लीस्ट। सो अपने को इस एंगुलर में कुछ तो पता है, अपने को ये हाइट निकालनी है, एंड फॉर दैट हाइट यू वुड नीड टू नो ये क्या चीज है। दैट इज सर्कुलर रीजनिंग यार, ये तो काम नहीं करेगा। व्हाट अबाउट दिस? अगर मैं ये ढूंढ पाया तो उसके लिए मुझे ये चाहिए रहेगा, वंस अगेन द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। दिस इज नॉट एक्चुअली डूएबल। ओके दिस इज नॉट हेल्पिंग। अच्छा तो अपने को इनफैक्ट सिर्फ वैल्यू ऑफ थीटा ढूंढनी है, अपने को पैरामीटराइजेशन ढूंढने की पूरी जरूरत नहीं है, बिकॉज कोई और एंगल भी पैरामीटराइज कर डालो। कॉल दिस एंगल एज साई, तो फिर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? कोसाइन थीटा, सॉरी कोसाइन साई, एंड साई बोल रहा हूँ, फाई यूज कर रहा हूँ, व्हाटएवर, कोसाइन फाई साइन फाई। और ये तो ऑब्वियसली क्या, ये नेगेटिव 2,0 था, राइट? but it isn't that hard because it's just 2 into sine phi, that is the okay half of that of course, just sine phi basically area हो जाएगा इस ट्रायंगल का। अपने को पूरा ये चाहिए ना, oh then it's not that, it's just 3 upon 2 sine phi। तो ठीक है ये मैक्सिमम कब होता है? when sine phi is 90 डिग्री, सॉरी it's 1, तो phi is 90 डिग्री, मतलब कि ऐसा। तो फिर ठीक है ना, मुश्किल नहीं है, तुम डायरेक्टली ये एंगल ढूंढ सकते हो। सो दिस इज 2, दिस थिंग इज 1, right? So sine of whatever, sorry, this, right? So अच्छा tan, oof, so tan of theta that is equal to 2, huh? Wait, what? Seriously? That can't be, because this is 1 and this thing is 2. Why degree? This makes no sense, sir. Like ये base तो पूरा constant है, just know that.
एंगल POC, सो P, अच्छा ये एंगल, कम ऑन सीरियसली, मैं अभी तक पता नहीं क्या समझ रहा था इसको, मैं CPO वगैरह कुछ समझ रहा था, ठीक है ये एंगल, नॉट दैट हार्ड, इट्स जस्ट 90 डिग्री राइट, या so just pi upon 2, so there we go, k is equal to 2. Next question, 30. Third is okay, if this summation is equal to m into 2 power n plus t, where these are positive integers with HCF 1, so co-prime numbers, whatever. Oof. 1 to 100 of r into 2 power r minus 1 is equal to m into 2 power n plus t. So, you know what? Maybe it's not that bad because या तो अगर तुम 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर ऑब्वियसली t जो है वो ऑड रहेगा, मतलब ऑब्वियस है, because t is odd and everything, I get that. So t can be 1 or something, or 2 power n you say. Okay, but ऐसे तो बहुत सारे तो नहीं, अच्छा तो टू पावर n जो है that should be less than the whole thing over here, right? So 1 to 100 each is, in fact ये पूरी इसे take AGP है, right? This is not that hard, we can definitely do it, मतलब इसका तुम एक्चुअल वैल्यूएशन निकाल सकते हो, बट मुझे अभी तक तो सिर्फ ये देखना है कि क्या एग्जैक्टली अपने को ढूंढना है, m प्लस n प्लस c ऑफ कोर्स, बट इसमें अपन क्या यूज कर सकते हैं, सो अच्छा n जो है that can obviously only be less than 100, right? Not 100, 99 से शुरू होना चाहिए obviously, because अगर वो 99 से बड़ा रहा then ओके, नॉट एग्जैक्टली, जरूरी नहीं कि 99 से छोटा ही हो, दिस इज नॉट गुड, क्या कर रहा हूँ मैं, इसको डायरेक्टली ढूंढ लो ना, सब ठीक है, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, 1 into 2 power 0 plus 2 into 2 power 1 all the way till 100 into 2 power 99 or something. So 2 times of s, that's just equal to 1 into 2 power 1 and all the way till 99 into 2 power 99, और फिर आ जाएगा into 100, so plus 100 into 2 power 100 and so on, and subtract करो, so just s is equal to ये सब गया 100 into 2 power 100, ओके, माइनस ये तो सिर्फ 1 हो जाएगा, और ये सारी जो बची हुई चीज़ है दैट इज जस्ट 2 पावर 99 से लेकर तुम 2 पावर 1 तक जा रहे हो, दैट्स व्हाट इट इज, नॉट बैड, दैट्स जस्ट 2, ओके, सो क्या है ये 100 into 2 पावर 100 minus 2 plus, so अब मैं डायरेक्टली 1 till 2 power 99 लिख रहा हूँ, and that's basically the same thing as 2 power 100 minus 1, right? Exactly, and this is just minus 3 or something over there. दैट अच्छा, तो सिर्फ अपने को गैस वर्क से करना था, इसमें ऐसा कुछ सोचने लायक नहीं था, नाउ आई अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, तो जो पूरा समेशन है जस्ट इक्वल टू दिस थिंग, सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि 101 into 2 पावर, तो ठीक है ना, m जो है वो 101 रख सकते हैं, n कैन बी 100 एंड t कैन बी 3, को प्राइम है, एवरीथिंग वर्क्स, ओ प्लस t राइट, सीधी तो नेगेटिव में आ रहा है, राइट, नेगेटिव में आ रहा है ना ये, इज दिस करेक्ट, yeah, it looks correct, plus 1 minus 1 minus 2. And this thing would just be 2 power 100 minus 1, very correct. So ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सिर्फ तुम ऐसे लिख सकते हो, 101 into 2 power 99, और yeah, just plus, this is not going to work because अपने को plus t चाहिए, right? So ये क्या हो जाएगा, ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, so it goes all the way from 2 power 0 से 2 power 99, I get that, and we try to calculate it like this. Is it that hard? मतलब
क्या गलत हुआ मेरा इसमें? On it's just 2 power 100 minus 1 and then plus some other stuff. परफेक्ट यार, ये तो पूरा सही से होना चाहिए था, बट यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर टी तो नहीं दिख रहा है मुझे. CF1 of this thing 100 integers, come on, this is obviously ऐसा नहीं है. अब क्या, अब इस चीज को कैसे सॉल्व करूँ मैं? बिकॉज तुमने कहा कि ये ऐसा होना चाहिए एंड इट्स नॉट लाइक दिस एक्चुअली. HCF1, oh come on. I mean, sure, you can just say it's like 100 into power 100 plus. Yeah, very much doable. बट ऐसे तो फिर अपन हजारों रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं, तो ये तो कुछ ही कुछ हो जाएगा ना, राइट? इसका कोई एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मैं इसको हजारों तरह से लिख सकता हूँ. कोई भी एक प्राइम नंबर चूज करो यहाँ पे जो कि इससे अलग हो, या जस्ट कीप ऑन गोइंग लाइक दैट. तो फिर ऐसे तो ये काम ही नहीं करेगा, मतलब दिस मेक्स नो सेंस. अगर आप नेगेटिव टू होता देन यू हैव क्लियर मैच, बट इस टाइप से no, something is wrong. Something is definitely wrong. And then this thing upon 100 for some reason. Well, okay, so ye cheese plus ye cheese, I get that. But then that upon 100. For that to happen, अपने को ये चीज जो रहेगी ना plus t, that plus this thing, that should make something like 100 का multiple. That's not happening. That's not happening right there. N is a multiple of 100, I get that, but oh God, अब मैं क्या करूँ? This makes no sense. इसके आगे सॉल्वेबल नहीं है. क्या मैंने कुछ गलत सॉल्व किया इसमें? So down what s is, and then I put down what 2s is and subtract किया, right? Oh अच्छा, ये पूरा नेगेटिव में चाहिए था. That's why it went wrong. उफ, ये नेगेटिव में चाहिए था. Then okay, ये जो चीज़ है इसको भी तुम इसमें इंक्लूड कर सकते हो डायरेक्टली विदाउट मैनिपुलेशन. तो फिर ठीक है यार, फिर ये चेंज हो जाएगा. So then it will just be 100 into 2 power 100 minus 2 power 100 plus 1, that is 99 into 2 power 100, जो कि हाँ 100 और 99 को प्राइम है, plus 1. So yeah, fine. So just 99 plus 1 100, that is 100 200, and upon 100 is 2, so 30 का 2. Silly mistake. Next 31. Let I A B be this thing, ठीक है. What is this? A square cosine square x plus b square. अच्छा, उसका square. Oh really? 3i 1 upon 2 and 1 you say. ठीक है, तो basically yeah, in terms of a b ढूंढना पड़ेगा ये expression. It's from 0 to pi upon 2. Okay, तो पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा चेंज करते हैं. इसको मैं लिख सकता हूँ 4 upon pi इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा dx upon pi upon 2 of course. एंड ये जो चीज़ रहेगी जस्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे जाएगा माइनस a स्क्वायर कोसाइन ऑफ 2x, और सॉरी प्लस a स्क्वायर कोसाइन ऑफ 2x, ओके, प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू कोसाइन ऑफ 2x. वहाँ पे ये चीज़ का स्क्वायर, हाँ weird. Sure, अपन इसको स्क्वायर कर सकते हैं. That's okay, but it's not going to give us anything good. तो क्यों करूँ भला मैं? This integration. Or you could just change it, right? So pi upon 2 minus, like that, huh? Yeah. So ये जगह pi minus 2x. That's negative. Yeah, not that bad. Come on, think.
फिर अच्छा तरीका है indefinitely write cosine of 2x like this. Oh, why don't we do it like secant square or something? Because all right. So it was secant x, not ठीक है. फिर अपन ओरिजिनल इंटीग्रल सॉल्व करते हैं डायरेक्टली विदाउट दिस मॉडिफिकेशन. अपन डायरेक्टली secant square x बाहर निकाल लेंगे. सो मैं कर रहा हूँ, मैं पूरा जो कोसाइन स्क्वायर है उसको पूरा का पूरा बाहर निकाल रहा हूँ. secant power 4x and then a square plus b squared of t square and that thing square t dx of course. ये secant square अपन हटा सकते हैं and then it's just 1 plus t square because secant square, yeah, so 1 plus t square and then it's just dt. Oh yeah, so it's kind of like नीचे एक बाइपोटेटिक के ऊपर एक 1 plus t square kind of thing. So fine, get how it's going to go. Oh, it's not good, it's just not good. ठीक है, तो अब क्या t पावर इसका स्क्वायर obviously pi upon 2, so of course 0 to infinity, right? It's like 4 upon pi integration of 0 to infinity of, let's see, so इसका डेरिवेटिव क्या होता है? या 2b square t और oh god, that's not good. वो इस स्टेप पर नहीं कर पाएंगे because something else. ठीक है ना, फिर टी स्क्वायर कॉमन निकालना पड़ेगा. दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, नहीं यार, यू नो व्हाट, टी कॉमन निकाल. दैट विल बी 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर्ड अपॉन t प्लस b स्क्वायर. इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड इन दिस केस. फिर अब क्या है, तो इजी है. सो व्हाट यू वांट इज कि इसको मैं, इस चीज को मैं एज इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका जस्ट नेगेटिव a स्क्वायर्ड अपॉन t स्क्वायर प्लस, okay, just this much, right? So yeah, derivative of this thing is just that. T b, sorry, it's plus b squared. That's fine. You can definitely write it like that. कोई और तरह से लिख सकते हैं अपन इसको. नहीं यार, और तरह से नहीं लिख सकते इसको. बट ये चीज तो यहाँ पे नहीं है, कुछ और है. That makes no sense. We just want this to be the same thing. अब यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो फिर अपने को constant अपॉन वो सारा आ जाएगा. That's not nice. No, it's not. Square, right? Square, you say. Oh, we can definitely write it in a different format. So actually, it's very much doable. Not that hard. Right. So अगर मैं इस चीज की बात करूँ, a स्क्वायर अपॉन टी माइनस बी स्क्वायर टी, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका जस्ट फिर इसको ऐसे रखो, नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे. सो जस्ट बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, राइट? सो वी नीड टू फिगर आउट सम कॉम्बिनेशन जो कि अपने को ये दे. सो या a टाइम्स ये चीज प्लस b टाइम्स ये चीज, दैट शुड गिव अस दिस थिंग. सो a टाइम्स b स्क्वायर प्लस b टाइम्स a स्क्वायर, sorry, negative a times a squared. What am I doing? Right, so a squared into b minus a was, that's equal to 1, or b squared into b plus a, that's equal to 1 as well. So that just means, okay, b is 1 upon a squared plus 1 upon b squared, half of that, and then a is 1 upon b square minus 1 upon a square का half. ओके, तो इन सब्स्टिट्यूशंस के साथ मैं अगर उसको सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, देन इट्स मे बी इट्स जस्ट डूएबल, यू नो. तो क्या हो जाएगा ये 4 अपॉन पाई, या फिर मैं 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है उसका मैं समहाउ यूज कर सकता हूँ, बिकॉज देन 1 अपॉन टी दैट विल गो टिल, नॉट अ गुड आइडिया आई थिंक. या वो सेम चीज में वापस लूप कर डालेगा, दैट्स नॉट गुड. we'll have to do it like this. ठीक है, so you can just write it as 4 upon pi integration 0 to infinity of, let's see, right, 8 times ये सारी गंदी सी चीज, नेगेटिव a upon t square plus b squared whatever plus b into a squared upon t squared plus b squared, right? और अपने को इसको now इन
ये जो चीज़ है इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। पहले तो अपन इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट, ए स्क्वायर अपॉन टी प्लस बी स्क्वायर, राइट, इसका स्क्वायर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है। और इसको अपन ऐसे लिख सकते थे बट नहीं लिखेंगे, इनफैक्ट अपन लिखेंगे बी स्क्वायर टी माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब तुम सोच रहे हो ऐसे कैसे होगा, तो मैंने कुछ चीज़ें इसमें ऐड की। लेट्स से मैंने नेगेटिव 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर दिया और पॉजिटिव 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर दिया, तो नेगेटिव 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसा हो गया, और प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर रिमेनिंग है। और ये सारी चीज़ का इंटीग्रेशन करना, फर्स्ट डी टी वगैरह है बट मैं लिख नहीं रहा हूँ। एंड देन ये चीज़ तो ईजी है, ये तो पूरा नेचुरल लॉ को चल जाएगा, राइट। सो नहीं, नेचुरल लॉ नहीं है, फिर 2 है ना, ओह सो देन फाइन, 4 अपॉन पाई ऑफ नेगेटिव 1 अपॉन ये सारी चीज़ें स्क्वायर अपॉन टी प्लस बी टी बी स्क्वायर टी, सॉरी, एग्जैक्टली, एंड देन प्लस, तो ये चीज़ जो है दैट्स राइट 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ ए ऑल दैट स्टफ। सो 1 अपॉन 2ab tan इनवर्स ऑफ, ओ यहाँ पे a और b भी चाहिए, tan इनवर्स ऑफ ये चीज, सो b3 माइनस a स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर एंड दैट थिंग अपॉन 2ab, राइट, एंड ऑल ऑफ दिस गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो जब तुम 0 पुट करने वाले हो देन this goes till what, negative infinity in that case, because जब तुम 0 पुट करोगे it does go to negative infinity. That's not good. This is not nice at all. Yeah, 0 to infinity, seriously. Okay, fine, no problem. You know, ठीक है, तुम इसमें 0 पुट करोगे then it's just या tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव पाई अपॉन 2। ये चीज जो है ये दोनों केसेस में इनफैक्ट जीरो हो जाने वाली है, बिकॉज यू कैन जस्ट राइट दिस एज बी स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ पे टी आ जाएगा। सो जब इन्फिनिटी है इट इज जीरो बिकॉज टी स्क्वायर बड़ा है टी से, एंड देन इट जस्ट गोज अवे। और जब ये जीरो है देन इट्स ऑल्सो जस्ट जीरो बिकॉज ये तो जीरो है। सो या 4 अपॉन पाई, ये चीज तो जीरो हो गई, राइट, दोनों केसेस में। और ये चीज जो है so b upon 2ab, let's do it. First of all we'll put infinity in there, so infinity पे ये हो जाएगा tan inverse of infinity which is pi upon 2, okay, and then minus of, जब तुम 0 पुट करोगे this is negative infinity, so negative pi upon 2, so plus pi upon 2 once again, nice, so ये पूरा गया, and then it's just 2 capital B upon AB, not that hard. So yeah, we can definitely do this thing. So B is just this thing, 2B is yeah ये चीज, and that will just be a upon d plus b upon a. And this was really nice. So ये इंटीग्रल मैं याद रख सकता हूँ that this thing will just be a upon b plus b upon a. Right. So 31st के मैं ऐसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ a upon b plus b upon a. Who knows? मैं बाद में इसको रिव्यू कर सकता हूँ। Okay, and मतलब इतना सिमेट्रिक है, ये यही दिखाता है कि इनफैक्ट मेरा करेक्ट होगा प्रोबेबली। सो ये चीज क्या हो जाएगी व्हेन इट्स लाइक 3 टाइम्स ऑफ दैट, ठीक है, तो दिस थिंग इज इक्वल टू आई, दैट इम्प्लाइज जो आपको चाहिए 3i ऑफ 1 अपॉन 2 कमा 1, सो आई ऑफ देखते हैं, तो a is 1 upon 2 and then b is 1, okay, and then 1 plus that is 2 basically, it's 3 upon 2, right, sorry, 5 upon 2, but you still have this, ये integer नहीं है, it's not integer at all, it doesn't make any sense, it's not an integer, what went wrong? No, just what went wrong? पूरा वापस रिवाइंड करो। ओके, तो क्या ये हमारा कुछ गलत हुआ है क्या? That's 4 over there. वो 4 तो कब से वहीं पर है, इसका अपने को टेंशन की जरूरत नहीं है। You never split it like that. और ये चीज 0 होती है, आई एम श्योर ऑफ इट,
राइट सो 4.5 इंटू ये सारी चीज़ अगर पाए है तो वो कैंसिल हो जाएगा आई गेट दैट दिस इज 2b अपॉन ab एंड देन 2b इज जस्ट दिस सो ab ओह सॉरी अपॉन e क्या कर रहा हूँ मैं ये चीज़ अपॉन e कम ऑन सीरियसली मैंने क्या किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ab क्यूब राइट सो a क्यूब b क्यूब दैट इज व्हाट दिस विल बी मैं वही लिख देता हूँ I is equal to a square plus b square upon a cube b cube, not anything else, right? Because upon ab, that's why, yeah. So that's nice. Let's do it. Let's figure out key I of 1 upon 2 comma 1 कितना होगा just equal to 1 upon 4 plus 1 upon 1 upon the 8 I think, and that is 2 plus 8, right? That's 10. So yeah, 30 basically. Oh, this wasn't that hard. So yeah, 3i, whatever, just answer is 30. So let's go to 32nd. Quotient of x power 5 in the expansion of this whole thing is this, then n is what? Oof. But 1 plus x squared to the power of 15. In the expansion of this thing, quotient of x power 5. I'm thinking, why don't we go for Taylor expansion or something, you know? That is a lot of 15, you see. I just equal to 3 okay, so we just want x power 5. Yeah, sure. It's like कि तुम 15 लोग कंसिडर कर रहे हो राइट सो नंबर ऑफ पीस चाहिए अपने को बेसिकली क्वेश्चन अगर निकाल रहे हो तो 15 ब्रैकेट्स है तो 15 लोग कंसिडर कर रहे हो और हर एक ब्रैकेट में से या तो तुम्हें 1 मिलेगा या फिर x मिलेगा फिर x स्क्वायर मिलेगा तो अगर 1 है लेट्स जस्ट से तुम्हें 0 कॉइन्स मिल रहे हैं उससे अगर x है तुम्हें 1 कॉइन मिल रहा है और अगर x है तो तुम्हें 2 कॉइन मिल रहा है तो हर एक इंसान तुम्हें या तो 1 या फिर 2 या फिर या सॉरी 0 या फिर 1 या फिर 2 कॉइन्स दे सकता है तो फिर कितनी तरह से तुम बेसिकली 15 कॉइन्स 15 नहीं क्या 5 कॉइन्स ले सकते हो दैट्स काइंड ऑफ द क्वेश्चन दे आर आस्किंग राइट या इट सीम्स लाइक दैट तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बिकॉज नहीं यार ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इट डजंट मेक सेंस नॉर्मल तरह से करो ना नॉर्मल तरह से क्या होगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर तो मैं इसको एक कंसिडर कर रहा हूँ एक बॉक्स और इसको सर्कल कंसिडर कर रहा हूँ तो बारह 15 that is just we'll only go for 1 plus x की powers so 15c 0 1 plus x की power 15 so yeah because ये अपने कुछ देगा x square की power 0 plus 15c 1 1 plus x की power 14 times x square and then plus 15c 2 1 plus x की power 13 and then x power 4 and after this you don't have to search क्योंकि next चीज x power 6 आ जाएगा उसके बाद में यानी 5 से बड़ी पावर्स आएगी हमेशा तो उस केस में तुम्हें चेक करना है सो ठीक है ना इसमें x power 5 कब आता है that will be like 15c5 so 15c0 and then 15c5 and plus similarly 15c1 15 oh so अपने को सिर्फ 3 चाहिए right so 14c3 right this thing so अपने को सिर्फ 1 चाहिए 13c1 and fine दो का डिफरेंस है I mean that's obvious ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है fine so 15c5 that's 15 into 14 into 13 into 12 into 11 upon 5 it's 5 into 4 into 3 into 2 nice 5 to 3 15 गया right let's see 4 तो फिर ये 3 चला जाएगा this is 7 so 7 into 13 into 3 into 11 that's this thing 15c0 is just 1 plus 15c1 14c3 15c1 is 15 so 15 into 14c3 which is
14 into 13 into 12 upon 3 into 2. So this is just 6, right? So yeah, in fact ऐसे करते हैं ना 7 and then this is just 4. So 7, right, 15 into ये सारी चीज. Also it's like 60 into 7 into 13. और 60 को मैं just for my convenience ऐसे लिख रहा हूँ 3 into 20. Okay, then finally ये चीज 15c2, so 15c2 is 15 into 14 upon 2 and that is 7 into, and 13c1 is of course is 13, so yeah, 7 into 13 into, well, 15, right? So 15 is just 3 into 5, so into 3 into 5, and yeah, 7 into 13 into 3 into 23 plus 11, which is 30, 23 plus, that is 34, I think. So now it's doable. Oh यार बहुत बुरा है, सीरियसली मुझे कैलकुलेट करने को बोल रहे हो. Wait, what is this thing? 3nc4 plus nc, what? Why 3? What are you talking about? ये क्या है? So what is this? nc4 and nc5 of all things. Oh, okay. Why do it like this? जो आपके पास में इससे बेटर तरीका है. They of course want us to do like that. तो अपने को क्या करना है कि x cube minus 1 upon x minus 1 that to the power of 15, right? और in fact better way रहेगा कि अगर ऐसे 1 minus x power 3 upon 1 minus x power 15, and that's just 1 minus x power 3 into that power 15, and then 1 minus x to the power of negative 15, right? Now it's much more doable. So पहले तो अगर इसमें कांस्टेंट, इसमें से मैंने कांस्टेंट लिया, so just 15c0, right? तो मुझे इसमें से क्या लेना पड़ेगा? We would need 5, so like negative 15c5. I know अजीब नोटेशन है बट मैं उसको यूज कर रहा हूँ. Yeah, then of course नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे because ये नेगेटिव था. Makes sense. और फिर अगर यहाँ पे 3 है then that's plus 15c3. actually नहीं, negative because negative 15c3 and यहाँ से मुझे 2 लगेगा, so negative 1 power 2 वो तो चला ही गया in fact. Exactly. So then it's just negative 15c2. That's it. That's our expression. चलो करते हैं इसको. negative 15c5 क्या था? negative मतलब मैंने नोटेशन पे क्रिएट किया है but you get the idea. It's just negative 15, negative 16, negative 17, negative 18, negative 19, and that thing upon 5 factorial. So in fact it's pretty much the same thing as saying negative 19 of 19c5, right? So ये जो पूरी चीज है that's just equal to 19c5, like this complete thing is just 19c5 because 15c0 is just 1. और ये जो चीज रहेगी, so what's negative 15c2? that's just equal to ये सारी चीज upon 2 factorial, which is basically just 16c2, right? So 16c2 times 15c3, that is what this thing is. Yeah, तो अपने को चाहिए nc4. okay, this is weird. So अपने को ये तो मिल गया कि क्या c5 है, just 15c5, but what you are saying is that this complete thing is just 3 nc4. How? X cube you say? Well, that's good. It's doable, very much doable. Okay, let's keep on going. तो करते हैं इसको, कैलकुलेट करते हैं. 15 into 14 into 13 into, okay, that upon 3 factorial or whatever, and because it's supposed to be 4, we'll do it like that, into 16 into 15 upon 2, right? So what I'm thinking is कि यहाँ पे मुझे 4 चाहिए रहेगा, so I'll just say okay 4 times of that or whatever. Oh yeah, 3 nc4, right? So 2, so just put 4 over there into 2 over there, और फिर मैं फोर्सफुल एक 3 पुट करूँगा, so this thing upon 3 times 3. so ये जो पूरी चीज रहेगी that is equal to 3, अच्छा ये 3 है
we will go in one of these. So let's say ये 5 हो जाएगा, then it's just plus 16 into 15 into 14 into 13, 3 numbers of course till now. And why is this so complicated? Okay, 16, 2 था, very correct. Hey, was this negative? Right, this was actually negative. That should... Uh-oh. It's not C3, yeah, it's C1. Okay, I get what went wrong. तो यहाँ पे 1 आ गया है, क्यूब है, स्टिल तो मैं सेकंड पावर लगेगा. I get it. Now it should be correct. और फिर ये नेगेटिव है, that means well still negative of course. Something's weird about this. अच्छा 2 रहेगा और ये क्यूब है तो मेरे को सेकंड पावर लगने वाली है. That will in fact give us this thing. तो वो सब ठीक है, but then this thing is not negative. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? स्टिल तो गलत हो रहा है. और यहाँ पे मुझे पॉजिटिव चाहिए. This makes no sense. Slightly different. तो मैंने सोचा था उससे काफी अलग है. ये चेक is 15, so negative 15 times all of this. C4. How does that even make sense? Something C5. नहीं यार, मुझे अलग ही दे रहा है. तो इन लोगों ने क्या किया एग्जैक्टली कि इनको ऐसा कुछ मिल गया? Three times of NC4 plus this quantity. Okay, maybe उन लोगों ने ऐसा दिया हुआ कि 1, so 1 to the power of क्या फर्क पड़ता है, right? So x power 15 करने के क्या तरीका है? X power 1 and x square की power 2, that's one way. X power 5 x square की power 0, that's another way, right? So 5 create करने के लिए. And x power 3 x square की power 1, that's the last way. 0 1 2 इतना ही सकता था. 3 पे जाओगे तो कुछ हो जाएगा, right? तो I get that. So जो अपने लास्ट टाइम किया था तो ऐसे ही हो रहा है, right? This would just be या जो अपने लास्ट टाइम किया वैसा ही हो रहा है ऐसे, बट वो अपने को ये नहीं देता है in any way. So what is this? Why not with coefficient? Let's go with that. So हो जाएगा 1 power what? 2 plus 1 3. 3 minus 3 is 5 minus 3 just 12. So it's like 15 factorial upon 12 factorial, 1 factorial, 2 factorial. Yeah, 15 factorial upon 12 factorial. पहले 3 नंबर आए थे, just 15 to 14 into. Okay, and then it's just 2 factorial. Cool. So this is just 3 into 15c3. Okay, and this thing is, so ये क्या 0 and 5, it just means okay यहाँ पे 10 factorial आने वाला है. पहले 5 numbers and that's also divided by 5 factorial because यहाँ पे 5 है, so that's nice. It's just equal to 15c5. And this whole thing, so 1 plus 3 4, 15 minus 4 is just 11. तो पहले 4 numbers, right? 4 numbers upon 3 factorial into 2 factorial. 2 factorial is just 2. So yeah, it's just equal to 2 times of 15c4, I think. That should make sense, right? And this thing is, sorry, why is this thing? 5. This better. Or yeah, that's how it is. So 2 times of this 15c5 and this. Still doesn't give us this thing, does it? Weird. अभी बहुत अजीब हो रहा है, बस this is leading us nowhere. ये तो एटलीस्ट हो गया, वो ठीक है, बट इसका क्या? Oh, I'm thinking 15c4 plus sorry,
Really sorry. Uh, okay, 3 into something and then 2 into potential 4. Well, that about does it, right? It definitely does it. Oh, okay, it's different. It's not 2 factorial, it's 1 factorial. It's 3 factorial, 1 factorial. तो अपने को इनफैक्ट 4 से मल्टीप्लाई करना है. It's just 4 times 15c4. Now it's making sense for some reason. So 15c4 plus 15c5 is just equal to 16c5 plus, okay, 3 times of 15c4 plus 3 times of 15c3. That's just equal to 16, 3 times of 16c3, right? So that means जो अपना n था that's just equal to 16. But ये, sorry, 4 यहाँ पे. But ये ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम लग गया. Intuitively ऐसे इस फॉर्मेट में लिखना है इसे समझेगा. I don't know. 32 का क्या हो गया? 16 is the answer. Next question, 33. यार मैंने अलग अलग तरह से ट्राई किया, सब तरह से सेम वैल्यू मिलेगी, राइट? बट उस फॉर्मेट में नहीं मिल रहा था. बिलीव मैंने सब टाइम इसमें वेस्ट कर दिया. 33. If sin alpha is equal to this, cosine beta is this, and the value of, oh अच्छा, अल्फा पाई बाय 2 पाई में है, इट्स लाइक ओके, कोसाइन जो है वो नेगेटिव है. यहाँ पे 3 पाई बाय 2 पाई में कोसाइन पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, व्हाटएवर. वैल्यू ऑफ कोसेक ऑफ अल्फा प्लस बीटा can be expressed in the lowest form as p upon q. So basically sin of alpha plus beta ढूंढो पहले तो. 12 upon 37 seriously. So you will need cosine of alpha for this as well. So वो किसने ढूंढा है? Just 12 and 37. Why? You are saying okay 37 squared minus 12 square का square root ढूंढो. Seriously. Square root of 25. अच्छा ठीक है, शायद कर सकते हैं. And then just 49 I think, which is just 5 into 9, so 45. तो ठीक है, cosine alpha is just 12 upon 37. Cosine alpha is negative 45. Wait, what? No, that can't be because, sorry, it's 5 into 7, that's 35. It's just negative 35 upon 37. Okay, what about sine beta? Sine beta is, we don't know. Cosine beta is 20 upon 101. अच्छा इसको रिमाइंड करते हैं. 101 minus 20, that's just going to be 91. Sorry, 81. And then 81 और फिर दूसरा आएगा 121. So 11 squared and 9 squared. So 99 आएगा ये वाला. It's just 99 upon 101, but in negative. Okay, no problem. अब करते हैं इसको. So sine of what? Sine of sine of alpha plus beta. Let's figure out what that thing is. Sine alpha cosine beta. So 12 into 35. No, sorry, what am I doing? Sine alpha cosine beta. That's just 12 into 20. 12 into 20 or plus cosine alpha cosine alpha sine beta. Sine alpha sine beta, right? So plus 35 into 99, and that upon 37 into 101. ये चीज. Okay, fine. Value of p plus q. Let's do this thing. 5 तो कॉमन दिख रहा है पहले. 99 भी, so 15 है. 5 into 3 कॉमन है. Okay, 5 into 3 कॉमन निकालिए. Just 4 into 4, that's just 16. 16, and then this thing is 7 into 33, right? 7 into 33 is 21, 21 to 31, like this. That upon 37 into 101. Let's see. 5 into 3, and ये हो जाएगा 247. Is this doable? 247, huh? 37 का मल्टीपल तो नहीं है. That's just 7 to 33, right? It should be like that, 231 or 247. Very much correct. So this makes no sense because 247 37 का multiple तो नहीं लग रहा. No. क्या गलत हो गया? 3 कॉमन लिया, 4 बच गया. 5 कॉमन लिया, 4 बच गया. यहाँ पे 5 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, 7 और 33 बच गए. Right? Yeah. Should have made sense.
तो ये क्यों नहीं हो रहा है? क्या अपने को एक्चुअली में सबसे ढूंढना पड़ेगा इस टाइप से कि कैलकुलेट करो? और बट नहीं यार, ये अजीब है। 101 क्या प्राइम है? आई थिंक इट्स प्राइम, बिकॉज 10 तक तो इसके कोई डिवाइजर्स नहीं दिख रहे मुझे। क्या 7 भी नहीं है? सो ठीक है, ये प्राइम है। और ये क्या है? 36 प्राइम होता ही है। सो फाइन, दैट मीन्स कि ऊपर कुछ भी कर दो तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। सो दैट्स इट, ये चीज अपॉन 37 to 101, दैट इज आवर थिंग, कैलकुलेट दिस थिंग। सो क्या है ये? दिस टाइम इज 5, जस्ट 1 2 3 5। सॉरी, seriously, 1 2 3 5, that times 3, just 5 1 carried on 9 0 1 carried on 6 1 7 3 3 7 0 5 upon ये सारी चीज, just 3 7 3 7 whatever. So you got it. It's like this. Okay, find the value of p plus q. So that's just 7 4 4 2 7 4 4 2. बट ये थोड़ा बड़ा नंबर नहीं हो गया? मतलब इंटीजर टाइप के लिए वॉट एवर। नेक्स्ट, ओ अच्छा, ये साइन अल्फा है, उसका रेसिप्रोकल ऑफ कोर्स। हाँ, सिर्फ सेम थिंग है तो हाँ, कोसेक अल्फा भी फाइन। सो 34th, if a b c are distinct and these vectors are coplanar, then the value of a plus b plus c is। अच्छा, डिस्टिंक्ट है और ये जो तीन वेक्टर्स है, these are coplanar, like their determinant is 0 basically, that's what you're saying. Okay, so determinant of a b c b c a c a b, that thing is 0। उसी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, लाइक ऐड कर दो, फिर just a plus b plus c हो जाएगा यहाँ पे, a plus b plus c 1 1 1 b c a b whatever। सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, so a plus b plus c, एंड देन सब्ट्रैक्ट करो, जस्ट 1 b c आ जाएगा यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, c minus b a minus c a minus b minus c, cool, that's equal to 0। so या तो a plus b plus c 0 है, अदरवाइज ये चीज 0 होना चाहिए। फॉर दैट व्हाट वुड हैपन इज दैट c minus b का स्क्वायर, बट नेगेटिव ऑफ कोर्स, so नेगेटिव ऑफ b minus c स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव में ये भी आएगा, राइट? so नेगेटिव ऑफ, isn't that the same thing? because yeah, this is really the same thing, very much the same thing, of course, that's fine। so just a minus b into a minus c is equal to 0, that just means, okay cool, a squared minus of a plus b times sorry, b plus c times a, yes, and then plus bc, और ये जो बची चीज रहेगी b squared plus a c squared minus 2bc, and that's equal to 0। so of course summation of a squared minus summation of ab is equal to 0। hey, look at that, when does that happen? That only happens when a b c all are equal। so या तो a plus b plus c 0 है, या फिर a is equal to b equal to c, and these are distinct, you are saying। so of course a plus b plus c is equal to 0, so that it is 0। 35th करते हैं and then we'll stop। The maximum value of this function on the set A equal to this is, so A is the set of all x such that this thing is that। अच्छा, अगर ऐसा है then what's the maximum value of this thing? Seriously, so like x squared minus 9x plus 20 is less than 0 at something 20 का 5 and 4, right? so x belongs to 4,5, so right, this should happen। and then इसका maximum value क्या है? इसको डायरेक्टली देख सकते हैं अपन, right? so 6x square minus 30x plus 36 or something, so इसको 6 से डिवाइड कर लो, x square minus 5x plus 6 डिवाइड x minus 3x plus 2, so 2 to 3 वही चीज नेगेटिव है, yeah, wait what, सिर्फ 2 to 3 में नेगेटिव है, उसके बाद में हर जगह पॉजिटिव है, राइट? सो 3 के आगे पॉजिटिव है, isn't that right? और लुक एट दिस रेंज, इट्स ऑलवेज लाइक ओके, ये तो पूरा 3 से आगे ही है। अच्छा, 4 पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली? अच्छा, अपने से मैक्सिमम वैल्यू मिली है ना इस फंक्शन की, तो वो 5 पे मैक्सिमम मिलेगा अपने को, isn't that obvious? so 5 पे हो जाएगा 25 into, let's see, 10 minus 15 I think, right? plus, well, 36 to 5
That's just 180 minus 48. So ये हो जाएगा negative. Okay, just 180 minus 20 125, right? So 65 minus 48. That is 17. 17 is the value, maximum value. 35th का 17. There we go. We're done. So that's it. मैं इसको चेक नहीं करने वाला, मैं इसको बाद में चेक करूँगा. मतलब थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा 100 से ऊपर क्वेश्चन से इसमें करने के लिए. तो ठीक है. Let's see you in the next video. Bye. Okay, bye.